हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक प्रोग्रामिंग। जो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है या बेसिक एक कंप्लीट सीरीज़ है दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक दिस वन। एंड जो इसमें बाय यूजिंग एडमिन पैनल एज वेल, हम एडमिन पैनल से जो सी अपनी तमाम फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेंगे और कुछ इसमें इस वेबसाइट के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेंगे, जैसे कि इसमें ऐड टू कार्ट है, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन है, एंड दीज ऑल दी pages which is already being like developed because ये एक complete template है। So instead of that, जो हम technologies या ये कह लें programming languages या scripting languages with the backend हम यूज़ करेंगे, वो core PHP के अंदर जो से हम create करेंगे अपनी ये complete website जो सी है e-commerce। तो एक बड़ी अच्छी सी होने लगी है related to this thing कि एक complete e-commerce website कैसे बनती है by using PHP and MySQL. MySQL is a database as well, you know, and what we need to do is first is this is just like that. We have an editor like text editor. So I have two like text editors. One is like Sublime Text and another one is like VS Code. It's completely up to you guys which one you want to download it for your coding as well now. So after that, I have an XAMPP for like to run all the scripting languages for, as we can say that, for service provider if we need any kind of local servers on. So that's why we need this XAMPP control, and another option we have been banned, but most of the use of this for the backend like local service provider is just like the XAMPP one. You can download it from your the official website. Like you just wanted to go to the Google or and just type that the like download. I think I should have to write correct spelling as well now with the name of proper name. So उसके हमारे पास क्या है, डाउनलोड XAMPP कर देता हूँ, डाउनलोडिंग XAMPP पे क्लिक करता हूँ. So there are a lot of websites, but I use mostly downloaded from this website and this one. So अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. So अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो it takes some time to open it. So you have to just select your version as well now. आपने अपना वर्जन भी select करना है. तो one with the most latest version is about the PHP. It's about like हमारे पास जो current version है वो हम इनमें से डाउनलोड कर लेंगे because of that कि हमें 64-bit वर्जन चाहिए. हमें कौन सा अपना जो आपकी सिस्टम्स के रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंगली उसको ही सपोर्ट करे, क्योंकि अगर 32-बिट जो है वो आई थिंक सपोर्ट नहीं करता है. ये अपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में. इफ़ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट दिस के 32-बिट वर्जन जो है 64 को सपोर्ट करता है या नहीं करता. इंस्टेड ऑफ दैट 64-बिट जो है वो 32-बिट को वर्जन को लाइक सपोर्ट करता है. सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट XAMPP फ्रॉम दिस website like source.net. This is one of the most popular website where you can download these XAMPPs and install it. The installation process is very easy for everyone. You have to just only click on next, and starting installation will be completed, and you will just run the, and as well as you just go to the CMD and check the version. It just CMD, went to the CMD. If I'm right here like CMD and press enter, and I'm going to say that like PHP-V. So version I have right now, let me check. So you can see this guys, I have just downloaded the 7.4.29 the XAMPP server into my I have just downloaded into my system. So this is my channel. You can subscribe it, click the bell icon. Instead of that, you will get the latest videos about it related to the tech programming and the other projects I have just created for you guys. You can stay with me. I can tell you about each and every step about the how we can create the e-commerce website, or just like e-commerce website design with the admin panel. So this template we have is just an template जो कि मैंने डाउनलोड किया है. दिस इज गोना विद लाइक बूस्टर template. सो मैंने सिंपली क्या किया है कि मैं अगर अपने सी फोल्डर में जाता हूँ, XAMPP में जाता हूँ, HT टॉक्स में जाता हूँ, तो इसकी ही ब्रांड ई कॉमर्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है जो कि इस ब्रांड लोगो है, लेकिन मैंने वहाँ पर ब्रांड ई कॉमर्स कर दिया है. ये इस वेबसाइट के नाम से मैंने अपना फोल्डर बना कर क्रिएट कर लिया.
So after that I have to just created another 3 folders that which are very necessary to include our files, images and GS scripts as well, now to integrate with our websites. As you can see, ये वो टेम्पलेट है जो कि मैंने डाउनलोड करके अपना साइप्लान टेक्स्ट के अंदर जो सा ओपन किया हुआ है. सो दिस इज द कोड ऑफ दिस वेबसाइट वी हैव राइट नाउ. जब आपके सामने ये जो एक व्यू नज़र आ रहा है, तो ये इंडेक्स की फाइल जो है बेसिकली वो रन हो रही है. अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं. अगर मैं सहज को ख़त्म कर दूँ, सो यू कैन सी दिस गाइस. After that, what I can do now, right? So first of all, I have to just create a 3 folders. And first one is like CSS, and the second one is like images, because I have to download it, or just like I have to insert download these images like these ones. And if I'm going to click on right click, you can see this, we have an option to download an image. So after that I have to click on this like div, I have option to download this image as well now. So what step will be the next thing is the 2 folders is now being created. I'm not going to create the GS files. You can see this guys, they have also GS files right now. I'm going to use the just like scripts directly into my like index.html or the home page which I'm going to create it into this project. This is my own project, and this project is already built in, or just like I've just downloaded from the Google.com, or just like any of the browser you can download it. You have to just you can say that type it like e-commerce free template, you will get this template easily, or any of the them you can get the template. So हमें स्क्रैच से एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, बिकॉज इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन PHP एंड बूटस्ट्रैप. इसलिए हमारे पास है ये उसके टेम्पलेट, इसलिए हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है कि HTML और CSS के साथ अगर एक कंप्लीट स्टाइल वेबसाइट बनाए तो उसमें हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाता है. सो व्हाट स्टेप इज नाउ आई एम गोइंग टू डू इज आई हैव टू जस्ट क्रिएट अ फर्स्ट फाइल and select this one, and this is like index.php. Got it guys? So I'm going to do now, remove this thing, remove it, Control A, Control C, copy this whole code and paste it right here. Simple. It's very easy. And go into the just like what I can do now. It's, you can see this guy that we have CSS poster for CSS, we have this jQuery.js. So I'm not going to use just like this all this type of things, because this template is adding the CSS files into their own folders. So अगर कोई मेरे पास अपनी मैंने कोई CSS डिज़ाइन करनी है, तब मैं एक CSS फाइल यहाँ पर क्रिएट करूँगा. अदरवाइज मेरे पास अगर जब बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन CDNs मौजूद हैं और ये टेम्पलेट अगर बूटस्ट्रैप को सपोर्ट कर रहा है, तो दैन व्हाई आई शुड use the CSS files. I think this is, we have 2 approaches for this thing. Like first we can download it the whole thing like CSS or JS folders and integrate into our projects. And the second thing is we have been like CDN links to just like get the all the CSS which will be the developed in Bootstrap. So went to into our doc, and if I'm going to be remove this all like script each and everything, I don't need this. Yeah, right here. And so you can see this guys, we have just only simple thing what we have now. So another file, instead of that, जब तक ये खुलता है, ऑलरेडी खुल तो चुका है, लेकिन मैं आप बाकी फाइल्स जो थी वो कंप्लीट कर लेता हूँ. कॉन्टैक्ट की है, प्रोडक्ट की है, सिंगल की है. सो सेकंड फाइल जो मैं क्रिएट करूँगा वो ये होगी मेरे पास contact.php. सो मैंने इसको एक फाइल क्रिएट कर लिया. उसके बाद हमारे पास कौन सी फाइल है, products.php की नाम के ऊपर हमारे पास एक फाइल है. सो मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ. products क्रिएट करता हूँ products.php. सो यू कैन सी दिस गाइस, हमने एक कंप्लीट एक वेबसाइट एक products.php नाम की एक फाइल क्रिएट कर लिया है. द लास्ट फाइल वी हैव बीन इज लाइक सिंगल पेज और जस्ट लाइक समथिंग, उसने बीच में एक स्पेस डाली हुई है. सो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए. सिंगल पेज चले, अगर मैं सिंगल पेज.php. सो
यहाँ पर जो हमारे पास 4 फाइल्स हैं एज डेज हमने यहाँ कॉपी क्रिएट कर लिया है। इंडेक्स में हम अपना कोड जो है कॉपी पेस्ट कर चुके हैं। द सेकंड थिंग, मैं अगर कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट के अंदर मैं यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ये तमाम की तमाम चीज़ें। आई डोंट नीड दिस थिंग। अगर कॉन्टैक्ट करना है तो एक अनदर फॉर्मेट के साथ इसके अंदर गूगल मैप इंक्लूड है, वो एक अनदर स्टेप है हमारे पास। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू ऐड द गूगल मैप इनटू दिस सीरीज। आई एम गोइंग टू जस्ट लाइक ईमेल से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे पास एक एडमिन प्रोसेस है तो उसके अंदर हम अपने कॉन्टैक्ट मैसेजेस को भी शो करवा सकते हैं, जो कि यूजर्स जो इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे रजिस्टर करते वक्त हमसे उनका हुआ होगा, तो अगर वो हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो या हमसे कोई क्वेरी करना चाहे तो वो क्वेरी कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट, तो हम अगर उनको रिप्लाई करना चाहे तो किस फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगर उनकी ईमेल हमारे पास है तो हम उसी ईमेल के ऊपर जो है उसको रिप्लाई कर देंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो है वो डिलीट कर दिया है। नाउ दिस सेव दिस थिंग, आई हैव टू रिमूव दिस, इसको रिमूव कर दिया है। सिंगल sorry not here right now, so it's not a problem, big deal, it's not a big deal। मतलब ये सिंपली कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम काम यहाँ पे कर रहे थे एक्चुअल में। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, हाउ हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो दो एडिटर आपके सामने खुले हुए हैं आईडी बेसिकली, तो कितनी ज़्यादा एकदम से वो कह लें जहाँ पर रिमूव करना था वहाँ पर रिमूव कर दिया है। मतलब जब इस तरह कॉपी पेस्ट करना हो तो इसका ध्यान बड़े तरीके से रखना है। तो इसको मैं जो सा हूँ यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने सब कुछ, और ये इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया है। So what I need to do is the second last page we have been, the last page we have is like single page.php, again copy, paste it right here, save it। So you can see this guys, हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं। इमेजेस, अगर मैं यहाँ से कुछ इमेजेस देना चाहूँ तो ये सारी की सारी मैं इमेजेस उठा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से अगर CSS मुझे नहीं चाहिए, सो मैं कैसे करता हूँ, ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ था नाम का, ये ऑलरेडी जो मैंने डाउनलोड किया है, तो मैं यहाँ से सारी इमेजेस उठा लेता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ से सारी की सारी इमेजेस या फिर ऐसे करता हूँ, जो शूज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो ही मैं यहाँ से करता हूँ इंस्टेड ऑफ लाइक पहले इसको मैं कॉपी करके या इसको मैं इसी तरह करके यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं है। फोल्डर में चला जाता हूँ, ब्रांड ई-कॉमर्स इमेजेस, नाउ पेस्ट इट राइट हियर। यू कैन सी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है सब कुछ, और मीडियम आइकन्स में मैं इसको रख लेता हूँ। अगेन मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, वेब पे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फर्दर और मोर इमेजेस हैं हमारे पास। दीज आर द इमेजेस, यू कैन सी दिस गाइस, एंड आई थिंक सो आई शुड टेक कंट्रोल ए, कॉपी, पेस्ट इट इनटू माय that folder exactly which one I have been created in that folder, paste it right here now। तो फिर इस गाइस हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ बात, सो वी डोंट नीड दिस प्रोजेक्ट। सो अब यहाँ पर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अब जाता हूँ गूगल के ऊपर और देखते हैं कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास इसमें। बेसिकली जो ये ई-कॉमर्स हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ये तो index.html में हम यहाँ पे जो है वो करना चाहिए। सॉरी अबाउट दैट गाइस, बेसिकली थोड़ी सी not going well, so e-commerce index.php, so that's why। okay, so you can see this guys, हमारे पास इस तरह से टेम्पलेट शो हो रहा है। so मैं इसको सेट करने के लिए जाता हूँ अगेन, where are the CDNs we have been here, and just like this one, ये JS का है और ये उसका CSS का हमारे पास है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर अगेन मैं इस ये जो हमारे पास CDN है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से इस तरह से नीचे थोड़ा सा स्पेस देकर ले जाता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं
यूँ कह लेता हूँ ताकि